ओके, गुडविल का पूरा चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल रिवाइज कर रहे हैं। गुडविल कैलकुलेशन के हमने टोटल 5 मेथड्स सीखे, जिसमें से फर्स्ट था सिंपल एवरेज, सेकंड था वेटेड एवरेज, थर्ड था अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैम सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सा आता है? सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है दैट इज सुपर प्रॉफिट एंड सिंपल एवरेज। एग्जाम के लिए हाईएस्ट इंपॉर्टेंट सुपर प्रॉफिट एंड सिंपल एवरेज। 2024 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया है सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले सिंपल एवरेज मैंने पहले भी जब फुल कोर्स लिया है तभी भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, हर जगह फॉर्मूलाज लिखना कंपलसरी है। फॉर्मूलाज राइट लिखे हैं, अमाउंट्स रॉन्ग है, कैलकुलेशंस रॉन्ग है, स्टिल ऑन द फॉर्मूलाज यू कैन स्कोर हाफ मार्क और 1 मार्क डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द सम। कंपलसरी फॉर्मूलाज हैव मार्क्स। सिंपल एवरेज मेथड में फर्स्ट व्हाट वी गेट इज हमेशा ऑलवेज गुडविल इज इक्वल्स टू, बोलोगे क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। This is my main answer and the main answer should always be at the top. Main answer should always be highlighted at the top. Next what we learned was working note. It had only one working note which was average profit का formula. Which was total profit divided by number of years. Total profit divided by number of years. Total profit divided by number of years. One thing I need to clarify over here is, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ रहता है? Goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years. If this is given in question, then 3 years purchase के पहला the word given is 3 years, so number of years of purchase will be 3. Average profit is of last 4 years, तो total profit कितने सालों का लेना है? 4, and divide भी किससे करना है? 4. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years. गुडविल किस पे वैल्यू करना है? 3 years purchase, तो नंबर ऑफ years of purchase will be 3. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years. तो एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है? 4. Am I very clear? नेक्स्ट हमने इस पे एक और पार्ट सीखा था which was making the table for adjustments. The table was year, the table was year profits. Both of these things are given in the question. Next what I do is make a extra column for adjustments, and lastly what I have is adjusted profit.
इन दिस टाइप ऑफ सम मैं एवरेज किसका निकालती हूँ, एडजस्टेड प्रॉफिट्स के एवरेजेस लेती हूँ, एडजस्टेड प्रॉफिट. Now talking about adjustments, how do I deal with adjustments? I have to first check whether it is an expense or an income. If it is an expense, the next thing what I'll check is whether it is a regular expense or extraordinary expense. Regular expense or extraordinary expense. Regular is expenses which are incurred in normal business parlance, in normal course of business, like my salary, like my repairs, electricity bill. Regular expenses. Extraordinary expense या extraordinary loss was सेल ऑफ मशीनरी पे या सेल ऑफ असेट पे लॉस. मोस्टली यही क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेल ऑफ असेट पे लॉस. फॉर रेगुलर एक्सपेंस हमेशा माइनस करते हैं रिपेयर्स. रेगुलर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज सबट्रैक्टेड. एक और रेगुलर एक्सपेंस था क्वेश्चन में, इन वन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज इंश्योरेंस एक्सपेंस, इनकर्ड रेगुलरली, इंश्योरेंस एक्सपेंस. एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एडेड बैक. लॉजिक तब मैंने एक्सप्लेन किया था, गिविंग यू अ स्मॉल हिंट. Such type of expense or such type of loss won't be incurred again in the next years or is not a regular loss. हर बार होने वाला loss नहीं है, but it is already subtracted from profit, so I am adding back. Always remember, for any extraordinary item I give reverse effects. If it is expense, I'll add back. If it is income, I'll subtract. Next what I have is income. Income के लिए भी things are the same. First what I'll do is I'll check whether it is a regular income. Regular income is arising on the normal course of business, or a irregular or extraordinary income. Mostly words to replace extraordinary are abnormal. Extraordinary के जगह even if they give you abnormal, so it is extraordinary, and regular के जगह they mostly give you normal. Normal income है, I'll add back, no problem. Extraordinary income है, I will subtract. Like profit on sale of asset, बार बार एग्जाम में आता है. Profit on sale of asset. Do I sell my assets regularly? No. It is 4-5 साल में once that I sell an asset and I gain profit. Such profit is not going to be incurred every year, so I call it an extraordinary profit. Usually profit है तो add होना चाहिए, but because it is extraordinary, I am subtracting, considering that it is already included in profit, which I am removing now. समझ रहा है? पक्का? Moving ahead, ये adjustments, these are the only thing which makes average profit special. अगर एवरेज प्रॉफिट का सम एग्जाम में आता है, इट विल ओनली कम फॉर एडजस्टमेंट्स. क्लियरली एडजस्टमेंट्स दी हुई होती है. देयर इज वन मोर थिंग टू रिमेंबर, इफ देयर इज लॉस इन एनी ईयर, आई विल सबट्रैक्ट. लॉस इज नॉट एडेड टू एवरेज प्रॉफिट, लॉस इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट. नेक्स्ट, वन मोर थिंग विच यूजुअली टर्न्स अप इन द एग्जाम इज, they have given you average profits, they have given you average profits of 5 years, like 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024. 5 सालों का एवरेज दिया हुआ है.
बट क्वेश्चन में इट इज क्लियरली स्टेटेड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years of purchase of average profit of last 4 years. In the exam stress, I see 5 years का average profit, I take 5 years का average, completely wrong. Last 4 years यानी कौन से लूंगी? 2024, 23, 22, 21. 24, 23, 22, 21, 2020 का profit will be irrelevant. There's one more word which we usually use for regular expense. I call it normal expense also. Anything, expense or income. There's one more word which is recurring. Recurring occurs again and again. For irregular or abnormal, I use the word non-recurring. This is ordinary. This is extraordinary. Clear? Clear? Most of the things of average profits are already covered. इससे ज़्यादा average profit में कुछ भी नहीं आता है. Moving ahead to concept 2, which is my weighted average profit. अच्छा, there's one more sum which is of depreciation in average profit. It was as far as I remember TS का illustration 7 check करो. illustration 7 का adjustment 3rd था. ये depreciation का adjustments I had told you once before going to the exam. एक बार देख के जाना, important. Next is weighted average method. Weighted average method में I have to assign weights to the years. जब मैंने explain किया था I had taken you very deep, जहाँ पे I had told you why am I assigning weight, why can't I consider my first year equal to 5th year, why every year has different weights assigned. याद आ रहा है? याद आ रहा है? We had spoken about break even, how a product moves in the life cycle, जिसमें मैंने बताया था product का initial stage, introduction stage, growth stage, maturity stage, decline stage. We had discussed about iPhone, Kotak. याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? नोकिया, ये सब हमने डिस्कस किया था. असाइनिंग वेट्स टू द ईयर, ये वाला पार्ट आने के चांसेस क्या है? वेरी लेस, नहीं आना चाहिए. बट हाउ डू आई प्रोसीड? अगर आ गया तो years profits, this is given in question. Weights given in question. But if not given, how do I assign? First year is suppose 2022, last year is 2024. 1, 2, 3, 4, 5. Ascending order. I have to write total of weights and weighted profit. Weighted profit is profits into weights. तो सपोज यहाँ पे प्रॉफिट इज 50,000, यहाँ पे इट इज 60,000, तो इट विल बी 50 इंटू 150,000, 60 इंटू 2 1,20,000 एंड सो फोर्थ. यहाँ पे what I'll get is total of weighted average profit. So total of weights is suppose 1 plus 2 plus 3 plus 4 is total of weights is 15. हाँ या नहीं? Suppose weighted average profit का total comes up to 15 lakhs.
Example, so my average profit will be, weighted average profit will be total weighted profit divided by total weights. Please remember, we have to compulsorily write the formulas. So it will be 15 lakhs divided by 15, which will round up to 1 lakh. गुडविल का फॉर्मूला सेम जो ऊपर था, ऊपर इट वाज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. अब एवरेज प्रॉफिट को हम रिप्लेस करेंगे विद वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years of purchase. Goodwill is equals to weighted profit into number of years of purchase. Next thing what I learned was concept number 3, super profit method. और highest important for exam. सुपर प्रॉफिट मेथड आएगा, मतलब आएगा, अगर आना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट में से ही एक आता है मैक्सिमम टाइम्स. कुछ समझ रहा है क्या ओमकार? डन रीत. सुपर प्रॉफिट मेथड पे जाऊं. सबसे पहले why is it not shifting to here? गुडविल इज इक्वल्स टू, पहले था एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. फॉर सुपर प्रॉफिट आई विल राइट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. Super profit into number of years of purchase. Working note number 1, average profit. Formula is total profit divided by number of years. Working note 2, normal profit. Normal profit is capital employed into NRR upon 100. Working note 3, super profit. Super profit is average profit minus normal profit. फॉर्मूलाज आर कंपल्सरी. लिखना है मतलब लिखना है, मतलब लिखना है.
इसको थोड़ा इन डेप्थ लेके जाके एक सम ले रही हूँ बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. एक क्वेश्चन ले रही हूँ. सपोज आई हैव अ बिजनेस कॉल्ड एज केटी Pharma. I have opened a pharmaceutical business whereby on an average I am earning a profit of 1 lakh. On an average I am earning a profit of 1 lakh. एक दिन उठ के अंश आता है and अंश is asking me, मैम आपने कितना कैपिटल डाला है बिजनेस में? What is the amount of capital that you have invested? So I told him, sir, I have invested a capital of around, you can expect 10 lakhs. How much capital have I invested? 10 lakh. अंश बोलता है, मैम I will also own a pharmaceutical company. I'll also invest 10 lakhs. How much will I earn? So I asked him, there is a concept called NRR, which is normal rate of return. क्या बोलते हैं? Normal rate of return. These are generally issued by the industry whereby they tell you on an average कोई भी आज pharmaceutical की या any other industry depending, if anybody is opening or entering into this business will at least earn a minimum of 6% per annum. How do we get this NRR? There are many different formulas used whereby different industries ka profit and growths are compared and they come to an industry average. Anybody working in this industry may be at least earning this much minimum. समझ रहा है? How do I decide in question? Given in the exam. Question में exam में it is clearly given NRR is this much. Now Ansh is telling, okay ma'am, tomorrow if I go outside and start my own business by investing 10 lakhs, I will earn at least 6% a year. Yes or no? Which is 60,000. Anybody who is entering into a business like me will earn at least 60,000. Yes or no? How much am I earning? I am earning 1 lakh. Super profit is market से मैं कितना ज़्यादा कमा रही हूँ. Super profit is market से मैं कितना ज़्यादा कमा रही हूँ. Anybody entering into a business like me, I am earning 1 lakh. He or she may earn only 60,000. So which means I am earning 40,000 more. Please understand, I have invested 10 lakhs. I am earning 1 lakh. And she is investing 10 lakhs and he is earning only 60,000. Which means I am earning 40,000 more than the industry by investing the same capital. हाँ या नहीं? This extra money or extra profit is because of my goodwill which I have created over the years. By investing lesser capital, I am earning more profit than the industry. Yes or no? Super profit, इसके बाद if they tell you goodwill is super profit into 2 years of purchase, so okay. Super profit into 2. The same question was given in this year's board paper. One of my child last year ka, what she did was she calculated average profit ekdam perfectly. She calculated normal profit ekdam perfectly. In the exam stress, she forgot to calculate super profit and she took normal profit into number of years of purchase. समझ रहा है? Complete sum right. But because of a small, I can say it skipped her mind, or maybe in the exam stress it got unnoticed and directly 3 mark में से she got only 1 mark, 1 to 1.5, whereby her entire paper was correct. So 2 MCQ and here was where she lost the mark. The most easiest topic, cash marks. समझ रहा है? I hope you don't do the same in this exam at least. Okay, can I move ahead to the next part? ये copy करके is it done? रुकना है और can I move ahead?
Next what I have is capitalization wala method. I have usually not seen this turning up in exam very often, but you can expect this in your MCQ. High chances of this coming up in the MCQ. First I am taking up capitalization of super profit because it is linked to the normal super profit wala. Capitalization of super profit. पहले I wrote goodwill is, देखो एक बार, first I wrote goodwill is super profit into number of years of purchase, yes or no. Now I'll write goodwill is super profit will remain super profit. The only thing which changes is super profit into 100 upon NRR. Baki everything is same, only number of years of purchase is replaced by 100 into NRR. Remaining everything same. Number 1, average profit. Can you tell me the formula for average profit? Average profit is total profit divided by number of years. Working note 2, normal profit. Normal profit was capital employed into 100 upon, into NRR upon 100. Into NRR upon 100. Working note 3 was super profit. Super profit is average profit minus normal profit. Continuing with the same question, KT Pharma's wala. Please understand, how much have I invested? 10 lakhs? Yes or no? Anybody who is investing 10 lakhs will earn 60,000? Yes or no? मैंने कितना invest किया है? 10 lakhs. How much am I earning? 1 lakh. कितना ज़्यादा? 40,000 ज़्यादा? Yes or no? मार्केट से कितना ज़्यादा? 40,000 ज़्यादा. 40,000 into NRR into 100 upon NRR which is 6. बताओ मुझे. $4 lakhs आ रहा है. पॉइंट्स में आ रहा है. कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो कितना है. या चलो, टू मेक इट अ लिटिल सिंपल आई विल चेंज द क्वेश्चन थोड़ा सा. आई विल मेक इट 10% here. कोई भी, and I'll make my own average profit as 1,50,000. रुक जाओ. I'll change the question so that it is easier. सुनो, कोई भी अगर आज मेरे जैसा बिजनेस चालू करता है, वो 10 लाख रुपए बिजनेस में डाल रहा है, 10% का प्रॉफिट है, so how much will he earn? Is 1 lakh? Yes or no? How much capital have I invested? 10 lakhs. How much am I earning? 1,50,000. Yes or no? मार्केट से कितना ज़्यादा? 50,000 ज़्यादा. एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 क्या है? एवरेज प्रॉफिट. सुनो,
सुनो 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 सुनो, मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है 50,000। किसी को भी अगर ये एक्स्ट्रा 50,000 कमाना है तो उसको कितना डालना पड़ेगा कि एनीथिंग का 10% इज 50,000। कितना डालना पड़ेगा 5 lakhs। 5 lakhs का 10% इज 50,000, हाँ या नहीं? तो डू यू एग्री मेरे को 10 लाख में 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लॉजिकली मैंने 5 लाख रुपीस कम डाल के मार्केट जितना प्रॉफिट कमाया है, हाँ या नहीं? आज अगर अंश बोलता है मैम आई हैव टू अर्न अ प्रॉफिट सेम एज यू आर अर्निंग, मैं उसको क्या बोलूंगी? मेरा प्रॉफिट कितना है 150, 1,50,000 कमाना है, 10% का मार्केट रेट है, तो यू हैव टू एटलीस्ट पुट 15 lakhs। 15 lakhs का 10% विल बी 1,50,000। मार्केट से आई हैव इन्वेस्टेड 5 lakh rupees लेस विच इज माई गुडविल। आई विल प्रूव सुपर प्रॉफिट इज 50,000 into 100 upon NRR which is 10, 5 lakh। समझ रहा है? Am I very clear? इसका there is one more type of sums in your exam whereby you are given other things like you are asked to calculate NRR or you are asked to calculate super profit, whereby बाकी सारी चीजें including goodwill, your capital employed, your average profit is given in question. मतलब any one figure will be missing and you are asked to find the other figures. Same, you will substitute everything in this format. This usually comes in super profit, हाँ, capitalization में नहीं, it comes in super profit. Easy है 100%। बढ़ू आगे, लास्ट पार्ट, concept number 5 which is capitalization of average profit। This is the only formula which is very different goodwill का। यहाँ पे goodwill की formula is goodwill is equals to capitalized value माइनस नेट असेट्स भी बोलते हैं, नेट असेट्स का ही दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट असेट्स भी बोलते हैं एंड वी कॉल इट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो। वर्किंग नोट 1, एवरेज प्रॉफिट। Average profit starts, it is still the same, it is total profit divided by number of years। याद आ रहा है? Working note 2, capitalized value is average profit into 100 अपॉन NRR, जो हमने सेम यहाँ यूज किया था। रिमेंबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, सेम उसी का एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एंड वर्किंग नोट 3 is your capital employed, we call it capital employed also and we call it net assets also। इस क्वेश्चन के या इस टाइप के देर आर ओनली 3 सम्स एंड उसमें एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है बट इट इज टू बी फाउंड आउट। तो आई टेल यू, आई एक्सप्लेन दिस अगेन इन रेशियोज ऑल्सो। यहाँ पे भी थोड़ा एक हिंट दे रही हूँ। देर आर 2 ways टू फाइंड
the capital employed. One we call it asset approach, other we call it liability approach. अभी ये क्या है समझो. First I am explaining liability approach. Imagine this is my balance sheet, 11th standard. The first thing what I have is capital. Now because it is partnership का, so it could have capital of partner A, partner B, हाँ या नहीं. Plus it could have current accounts also, current account of partner A, partner B, and it could have reserve also, which we call it general reserve. So all of this is my capital employed, capital plus current plus general reserve. Only a small hint here, if current account has debit balance यानी असेट साइड दिया हुआ है तो आई विल सबट्रैक्ट. कैपिटल प्लस करंट प्लस जनरल रिजर्व इज नॉर्मल, बट इफ इट इज गिवन ऑन द डेबिट साइड देन आई विल सबट्रैक्ट. समझ रहा है? द अदर वे इज माई असेट अप्रोच. असेट अप्रोच तो इज वेरी इजी. दिस इज माई बैलेंस शीट, दिस इज माई लाइबिलिटीज and these are my assets. Yes or no? In question I am given total of assets. Do you agree total of assets is total of liabilities? So example, my total of assets is 10 lakhs, so 10 lakhs is my liability also. If they tell me your external liabilities or other liabilities are 2 lakh, so my capital is my balancing figure. Yes or no? So capital will be 8 lakhs. Do you guys agree? But instead of this, what they do is they go it with a formula. You can make your own formula here. What I did was I wrote total of assets same is as total of liabilities. हाँ या नहीं? So do you agree with this formula? Total assets minus external liability is my capital. Total assets minus external liability is my capital. Do you agree? हाँ या नहीं? But I usually suggest don't remember the formula, try going with the balance sheet only. Explaining this part with a question. My average profit is 1,50,000. I have invested capital of around 10 lakhs. My profit is 150. I have invested a capital employed of 10 lakhs. NRR is 10%. Yeah? Done. Average profit is 1,50,000. Capital employed is 10 lakh. NRR is 10%. हाँ या नहीं? सबसे पहले what I'll find out is capitalized value. To earn an average profit like me, which is 1,50,000, how much capital do you have to invest? Do you agree? 15 lakhs. How much capital have I invested? 10 lakhs. कितना कम?
मार्केट से 5 लाख रुपीज कम, so that 5 lakh is my goodwill. The sum which I did above, उसमें भी goodwill was 5 lakhs. दिख रहा है? यहाँ पे भी goodwill is 5 lakh because it was the same question. तो capitalization method, this is the only method where answers are same. बाकी सारे methods में answers will vary. These are the only part where answers are same. Doubts, please. Doubt. Ask me the smallest doubt you have and the silliest doubt you have. Ask. There's one more part, which is concept number 6. We call it purchased goodwill. I have not yet taught this. I will be teaching this with shares. Shares and debentures में we learn this purchase goodwill. एक ही सब में illustration 1 ये हम shares and debentures के साथ सीखेंगे. Done. Doubt. एक और बार बोल रही हूँ, इन एग्जाम कंपल्सरीली राइट फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज हैव मार्क्स इवन इफ योर सम की वर्किंग गोज रॉन्ग, स्टिल फॉर्मूलाज विल फेच यू मार्क्स. व्हाट टू बी प्रैक्टिस नियर द एग्जाम, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. शैल वी एंड?